If I could go back and choose again, this is what I would do. So वीडियो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है. दिस वीडियो इज इंटेंडेड फॉर पीपल जिनको अपना जॉब छोड़ना है, who want to create their own life, right? Because I did quit my job 1 year back. You can check out the video somewhere here. And I'm gonna give you a 6-step process जिसको मैं फॉलो करता if I need to take that decision again. Okay, let's go. So first step of the process is what is your why? Because अगर तुम्हें यही नहीं पता ना कि तुम ये करना क्यों चाहते हो, you can never succeed in it, right? So don't quit, don't even think about it, right? And मेरे लिए मेरा why बहुत ज़्यादा simple था. So I met an accident with the broken neck and then I realized कि यार human potential is much more than what we imagine, right? And जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा पेन से सीखी है, I can make other people learn that with relative ease, right? मैं उन्हें वो सिखा सकता हूँ. Like I can teach them that you can create the life that you want. So that was my why, and that is how I got started. So step number 2, once you know why you want to do it, put a deadline onto it. मतलब deadline बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. You know why? Because अगर तुम्हारे सर पे deadline नहीं है ना, that means you will never do it. You will just keep pushing the task because then it feels like infinity. तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो. Start defining deadline in life. Because जब मैंने अपना जॉब क्विट किया था, I decided कि मैं अपने बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक वो सारी चीज़ें ट्राई करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, राइट? सो आई गेव माई सेल्फ अ डेडलाइन कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में अपना पूरा एफर्ट डालना है, राइट? दैट इज हाउ यू स्टार्ट द जर्नी. ओके, सो थर्ड स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग. स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू आर गुड एट. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए फिटनेस था, सिंगिंग था, स्पीकिंग था, राइट? वंस यू मेक द लिस्ट ऑफ इट, फिर तुम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना, एंड दैट इज थिंक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. ये दुनिया ना डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है. सो इवन इफ आई एम गुड एट लाइक मेनी थिंग्स, अगर उस चीज़ की डिमांड नहीं है ना, दैट मीन्स आई एम यूजलेस, राइट? सो फिगर आउट द थिंग्स जिसकी डिमांड भी है और वो तुम्हारी लिस्ट में भी है. सो बोथ द थिंग्स मैच, दैट्स वेयर यू स्टार्ट एट, बिकॉज दैट कैन नाउ बिकम योर सर्विस. इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई इज कि आज का ज़माना ना पूरा कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ जा रहा है, राइट? एंड दैट इज़ अ ह्यूज मार्केट. तो मैंने अपना पेज ग्रो किया इंस्टाग्राम पे, राइट? आई ग्रू इट टू लाइक 45,000 प्लस इन 3 months, एंड देन आई स्टार्टेड प्रोवाइडिंग कंसल्टेशंस ऑन सोशल मीडिया ग्रोथ, राइट? हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, राइट? मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास ये स्किल है, बट नाउ आई हैव क्रिएटेड एन एविडेंस फॉर इट, राइट? मैंने पहले ही प्रूव कर दिया कि आई कैन डू दैट, एंड नाउ पीपल वांट टू नो हाउ टू डू दैट, right? And that is how you start like using your journey to your advantage. So the fifth point is buy back your time. And now I have learned this the hard way, right? अगर मैं वापस से जॉब वाले पर्सपेक्टिव में जाऊँ, right? And if I try to choose it again, then what I would do is I would delay the quitting का journey and I would use my money. I would delegate the task, right? So for example, as a YouTuber, as a content creator, सबसे ज़्यादा consuming जो टास्क होता है वो होता है एडिटिंग का, राइट? आई वॉज वेरी सिली कि मैं एडिटिंग खुद ही करे जा रहा था और मैं जॉब भी कर रहा था, एडिटिंग भी कर रहा था, एंड दैट यूज्ड टू लाइक बर्न मी आउट. नाउ आई रियलाइज कि इट वॉज वेरी सिंपल. लाइक आई कुड हैव जस्ट बॉट समबडी टू डू द एडिटिंग दैट विल स्टिल मेक मी ग्रो, राइट? एंड मैं अपना जॉब भी कर सकता हूँ, राइट? एंड वंस यू गेट सम गुड रिजल्ट फ्रॉम योर वेंचर, तब you can decide to quit. So if I had to go back, then I would definitely do this step. So 6th point is timing is very important, right? अगर तुम्हें कोई decision लेना है ना, you can either discuss or decide. I decided that I want to do this and I'm going to go like full throttle on this, right? तो अगर तुम्हें absolutely पता है कि तुम अपने आप को जो भी तुम कर रहे हो ना अपने आप के लिए अभी इस वक्त लाइफ के अंदर, वो तुम 10 साल इमेजिन नहीं कर सकते अपने आप को करते हुए, राइट? इमेजिन योर सेल्फ डूइंग इट, प्रोग्रेसिंग इन इट फॉर द फ्यूचर. एंड इफ यू कैन स्टिल सी योर सेल्फ कि हाँ ठीक है, आज मैं मे बी एक टीम लीडर हूँ, कल मैं एक मैनेजर बनूंगा, परसों मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, बट इफ दैट इज नॉट वॉट यू इमेजिन योर सेल्फ इन लाइफ, राइट, देन यू कैन डायरेक्टली क्विट इट राइट नाउ. बिकॉज तुम 10 साल के बाद में वही फील करोगे, बट यू वुड लूज 10 years ऑफ योर लाइफ, राइट? एंड दैट इज स्टूपिड, राइट? So if you feel this is not for me, put in the paper, quit, and save 10 years of your life. If you really found this video helpful और इससे सच में तुम्हारी कुछ मदद हुई है ना, then definitely hit that like and subscribe button because उससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद होगी and I would really appreciate that.
एंड जब मैं अपना जॉब क्विट कर रहा था ना, देयर वाज नो वीडियो आउट देयर जो इतना प्रिसाइज था इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो आई एम रियली रियली ग्लैड आई मेड दिस. एंड इसको ज़रूर शेयर करना उस एक बंदे के साथ जो इज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस. Stay tuned for the episode 3 because I'm gonna prove overthinking is good for you. And yeah, until we meet again, keep dreaming.